Hello and welcome to Headlines Now with me, Linda Hercules. Before we move into all the stories in detail, let's take a quick look at the top headlines. Veteran filmmaker Yash Chopra passes away, succumbing to multiple organ failure. The Weather Department forecasts heavy rains for another 24 hours in Chennai and other coastal districts in Tamil Nadu. Arvind Kejriwal hits back at Digvijay Singh's move by daring the Prime Minister Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for a public debate. Pakistan is helping terrorists to enter Indian territory, says Home Minister Sushil Kumar Shinde. Law Minister Salman Khurshid puts off his Hajj pilgrimage amid speculations of an impending cabinet reshuffle. Kingfisher Airlines asked for more time and a personal hearing to explain to the DGCA why its license should not be cancelled. News in detail. Veteran filmmaker Yash Chopra, who was admitted to a suburban Mumbai hospital after being diagnosed with dengue fever, passed away this evening. The filmmaker is said to have succumbed to multiple organ failure. Chopra's death comes as a shock after earlier reports suggested that veteran filmmaker was on his way to recovery. The filmmaker was admitted to Lilavati Hospital in suburban Bandra on the 13th of October after being diagnosed with an attack of dengue. Chopra had announced his retirement from film direction last month. The filmmaker was looking forward to his release of the upcoming romantic movie Jab Tak Hai Jahan, with stars Shah Rukh Khan, Katrina Kaif and Anushka Sharma in the lead, slated to release on the 13th of November. Onto the state's weather report. Heavy rains have been forecast for another 24 hours owing to the persisting low-pressure trough over the Bay of Bengal. Chennai and various other districts along the coast of Tamil Nadu have been witnessing heavy thunder showers day in and day out for the past 4 days. Meanwhile, in addition to the storm, southwest monsoon has also paved way to the northeast monsoon. Kadalur, Nagapattinam and Virupuram have been experiencing showers consistently, and water reservoirs and dams have hence been filling up rapidly. It is estimated that the dams have been filled up to 60% in the last few days and are expected to overflow if the rains continue. Yesterday's trough of low pressure, which was extending from Camaran area to Western Bay of Andhra coast, has moved westwards and merged with an existing trough and now extends from Lakshadweep area to Gujarat coast. Because of this trough, it has rained at most places over Tamil Nadu and Puducherry. And highest rainfall recorded so far is 17 centimeters at Kunnur as well as Kadalur. As far as forecast for next 24 hours is concerned, it is likely to rain at most places over Tamil Nadu and Puducherry. One or two places may experience heavy to very heavy rainfall. As far as Chennai city is concerned, it will be cloudy with one or two spells of rain. A look at the nation. The national news. It started with a teaser on microblogging site Twitter with the former Chief Minister of Madhya Pradesh Digvijay Singh calling Arvind Kejriwal a self-serving, ambitious megalomaniac with a streak of Hitler. Mr. Singh followed it up with a set of 27 questions to the newest kid on the political blog, primarily seeking details of his NGO's foreign funding. Arvind Kejriwal hit back by daring the Prime Minister Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for a public debate and said that India against corruption will answer questions raised against it only after the Congress leadership and Robert Vadra come clean on charges of corruption. वो अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने रॉबर्ट वाड्रा जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से उन सवालों के जवाब दिलवा दें और हम उसके बाद उनके एक एक सवाल का जवाब दे देंगे। या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो वो अपने पार्टी बॉसेस मिसेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी या प्रधानमंत्री जी, इन तीनों में से किसी को भी मना लें, वो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, या तो राहुल गांधी जी या सोनिया जी या प्रधानमंत्री जी, और पब्लिक के बीच में उनसे बातचीत हो जाए। अगर इन दोनों में से दिग्विजय सिंह जी कुछ नहीं करते तो लोगों को लगेगा कि रोज खड़े होकर दिग्विजय सिंह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं, और उनका मकसद दिग्विजय सिंह जी का देश का ध्यान कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सलमान खुर्शीद घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा घोटाला, जमीन घोटाला, आदर्श घोटाला, इन सारे घोटालों से ध्यान बटाने के लिए वो रोज खड़े होकर ऊल जलूल 4-5 चीजें
मीडिया के सामने बोल देते हैं। Meanwhile, Congress party leader Harish Rawat said that the Prime Minister had better things to do than respond to the constant allegations of Kejriwal and his team. हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा जनता के बीच में रहा है और हाँ, केजरीवाल जी जैसे कुछ लोग जो केवल आरोप की राजनीति कर रहे हैं, इसी उनका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा आगे आने लग जाएं तो फिर तो गवर्नेंस का भगवान मालिक है। तब तो फिर देश के लिए एक प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ेगी जो केजरीवाल जी जैसे लोगों की बातों का जवाब दे और दूसरा जो है देश की व्यवस्था को चलाने के लिए। फिर दरअसल कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है, वो छूटी हुई बंदूकों में एक्सपायर कारतूस भर करके और हमले कर रही है। तो एक तो बंदूक ही अपने आप में टूटी हुई है और छुटी हुई है, और दूसरी उसमें भरने की कोशिश हो रही है तो एक्सपायर कारतूस भरे जा रहे हैं जो कि निकलते ही फुर्र हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा मालूम है कि वो अहंकार के अफीम के नशे में मदहोश हैं, लेकिन इस मदहोशी में कम से कम जो छुटी हुई बंदूकें और छुटे हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने के बजाय कुछ अपनी अकल का भी इस्तेमाल करें तो उनके चेहरे पे जो कोयले की काली पुती है थोड़ी हल्की हो जाए। खत्म तो नहीं हो सकती, वो तो काला कप जो है वो इनके साथ जाने वाली है। When asked about Singh's remarks that there was evidence against the kin of A.B. Vajpayee and L.K. Advani of alleged corruption, but that the Congress will never use that to embarrass them, Kejriwal said that his group has been talking about each party protecting others' interests. लेकिन दोनों में आम सहमति है, वो इनके बच्चों की बात नहीं करेंगे, वो उनके घोटालों की बात। आज खुल के दिग्विजय सिंह जी ने देश के सामने कबूल कर लिया कि हम बीजेपी के घोटालों को नहीं उठाएंगे। बीजेपी वाले भी खुल के कबूल कर लें कि भाई हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नहीं उठाएंगे। यही तो हम इस देश के लोगों को कह रहे हैं कि एक पर्दा है, पर्दे के पीछे सारे मिले हुए हैं। ये एक ही परिवार है जो इस देश की सत्ता चला रहा है और उस परिवार के सदस्य ये सारे लोग हैं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, सब लोग उसी परिवार का हिस्सा हैं और ये मिलके देश को लूट रहे हैं। Members of India Against Corruption clashed with the Delhi police during a protest outside Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Huda's residence in central Delhi. The activists were protesting against the Haryana government for allegedly favouring and facilitating land deals between son-in-law of Congress President Sonia Gandhi, Robert Vadra, and realty major DLF. After the protesters broke barricades, the police had to use water cannons to contain them and then resort to lathi charge. 7 persons were injured in the clashes, while several were detained and taken to the Parliament Street station. हम डंडों से नहीं डरने वाले, ये डंडे फिर खाएंगे। और हरियाणा में जितना भी मुख्यमंत्री ने जितना भी भूमि अधिग्रहण करके किसानों को जबरदस्ती जमीनें ली जा रही है, हर तरह से परेशान किया जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। नौकरियों में युवाओं के लिए भ्रष्टाचार, हर नौकरी पैसे में बिकती है, सब कुछ भ्रष्टाचार है। हम उसके भ्रष्टाचार के लिए पूरे हरियाणा में हम आंदोलन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा के कई युवाओं ने आज मिलके ये तय किया कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। उन्होंने तय किया कि वो शांतिपूर्वक वहां जाएंगे, उनके घर के बाहर बैठेंगे और अपने मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करना चाहते थे। जब ये वहां उनकी तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने बर्बरता से उनके ऊपर डंडे चलाए और इस बुरी तरह से पीटा कि काफी जख्म आए इन लोगों को। Moving on, the Vijay Mallya promoted Kingfisher Airline, which has not operated a single flight since the 1st of October, had been asked by the Directorate General of Civil Aviation to explain by today why its license should not be suspended or cancelled. But its response to the show cause notice was reportedly not satisfactory. The airline had asked for more time and a personal hearing but gave no details on a financial plan or operational plans, which is what the DGCA had asked for. Kingfisher Airlines' flying license has been suspended by the aviation regulator for failing to come up with a viable financial revival plan. Suspension of the airline's flying license implies that all bookings on the entire Kingfisher network, as well as through travel agents, will be completely halted. The BJP's National Vice President Mukhtar Abbas Naqvi said that the private airlines had been running havoc, charging baseless fares from people, and that the government should keep a tab on it. ये सारी चीजें एक तरह से खुली लूट हो रही है
और इस खुली लूट को सरकार बिल्कुल इग्नोर कर रही है। एक आपने कंट्रोल नहीं कर पाए, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। उस लाइसेंस के निरस्त होने के साथ साथ उस एयरलाइंस के मालिकों ने समझ लिया कि उनको भी जो है वो उनके कर्मचारियों के अधिकार को छीनने का लाइसेंस आपने दे दिया है। दूसरी तरफ अगर जो अलग प्राइवेट एयरलाइंसेज हैं वो पूरी तरह से लूट पे लगी हुई हैं। जिस तरह से आज बेतहाशा आप सोच नहीं सकते कि कितना 200% से ज्यादा किराए बढ़ गए इन पिछले त्योहार का सीजन चल रहा है, दशहरा है, दिवाली है और सीजन है। उन तमाम चीजों को इग्नोर करके और प्राइवेट एयरलाइंसेज जो है वो जिस तरह का व्यवहार कर रही है उस पर सरकार को तत्काल लगाम लगानी चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए और जो भी एयरलाइंसेज हैं जो इस तरह का काम कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। Accusing Islamabad of making purposeful attacks against India, Home Minister Sushil Kumar Shinde said that Pakistan was helping terrorists to enter Indian territory, citing that it was averse to the progress made by New Delhi despite a global economic meltdown. Mr. Shinde, however, said that there has been a slowdown in the number of incidents of intrusion into the country during the last 2 to 3 years, despite some of the terrorist outfits at work. The Home Minister ruled out complete withdrawal of armed forces from parts of Jammu and Kashmir until there was total peace in the valley. He added that New Delhi has full information about the cross-border intrusions. दो तीन साल में आतंकवाद की कम हो गई है इस देश में, वही एरिया में भी परसेंटेज देखा जाए तो, लेकिन हमारे पास पूरी इसकी इंफॉर्मेशन है कि थोड़ा सा लल ये हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान और भी वहां कुछ लोगों को घुसा रहा है, घुसपैठ हो रही है, इसकी हमें पूरी जानकारी है। जम्मू के लोग मुझे कह रहे थे कि ये अब जो सैन्य हमने रखा है यहाँ हमारे कश्मीर में, ये जल्द से जल्द निकालना चाहिए। तो मैंने कह दिया था कि जब तक इस प्रांत में शांति नहीं आती तब तक मैं सैन्य नहीं निकालूंगा, इस तरह की मैंने बात की थी। Law Minister Salman Khurshid, who was embroiled in controversy over allegations of misappropriation of funds by his trust, has put off his Hajj pilgrimage. His decision to put off the week-long visit also comes amid speculations of an impending reshuffle in the Union Cabinet. Mr. Khurshid was to leave for Hajj today and was to return by the end of the next week. He has been under attack from politician activist Arvind Kejriwal following a TV sting which alleged that the Zakir Hussain Memorial Trust run by the minister and his wife had misappropriated funds meant for providing equipment to the differently abled. Mr. Khurshid, however, had refuted the allegations even as the Uttar Pradesh government has begun an investigation. Moving on, though the Finance Ministry and the Telecom Department held different opinions on the issue of pricing of 2G spectrum, neither approached the Union Cabinet for a decision. Former Cabinet Secretary K.M. Chandrasekhar replied to the JPC saying the fact that there was an ongoing correspondence between the Department of Economic Affairs and the Finance Ministry and DOT did not mean that there was a dispute between the two that could not be resolved between them. The JPC had asked him to explain why the DOT was not advised to approach the Cabinet when there was a clear difference of opinion between the two departments. Opposition BJP said that it has agreed to the government's proposal of starting a regular winter session of Parliament from the 21st of November to the 21st of December, stating that she has discussed the date suggested by the government with her party and NDA leaders. Leader of opposition in Lok Sabha Sushma Swaraj said that she has conveyed this to the Home Minister. More stories will follow on the other side of a short break. Stay with us.